A very good evening, all of you. Am I audible, visible? Is everything fine? Kindly confirm my audio and video. Please check everything fine or not. Audio, video तो buffer जैसा दिख रहा है मेरे को. All good? मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है? Just a moment here. Further, you will get a call. Don't worry about it. So, guys, is everything fine? According to me, it is showing a little slow. That's what I'm checking. Please confirm, guys. Everything fine? Verma, everything is fine. Everything fine. Please confirm once. Oops, वीडियो बफर हो रहा है क्या? एक मिनट. Welcome to Unacademy. Welcome to the Kreatryx channel. So, first of all, a very happy Independence Day for all of you guys. थोड़ा सा late हो गया, maybe because of the classes and all. I'm not able to take it in the morning sessions. Okay, so heartfully wish you a very happy Independence Day for all of you guys. So I hope you celebrated to the best. Okay, let's start the session. So on this Independence Day, मैं तो सोच लिया आपके लिए कुछ देने के लिए. सो कौन सा सीरीज शुरू करना है ऐसा सोच लिया तो आई गॉट दिस आइडिया ऑफ द डीएनए दैट इज डिजिटल नेटवर्क एंड एनालॉग because all these three subjects are mostly the scoring subjects where you can get a very good score of 20 to 30 marks. Okay, so इसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस किया तो ज्यादा फायदा होता है. इफ यू प्रैक्टिस मोर इन दिस पर्टिकुलर सेशंस यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर एडवांटेज. सो what I felt is weekly, twice or thrice, as regular as possible. I'll continue this series. Okay, every month, 2, 3 sessions like that. I'll bring some good number of questions. It will be like revising your concepts and most frequently occurred questions, topics like that we'll be discussing. While discussing the solution, I'll explain the things betterly such that you'll be getting the clarity. Okay. So आज एनालॉग से मैं तो ऑप एम्प का क्वेश्चंस लाया. ऑप एम्प में जैसा स्किमिट ट्रिगर and what we call filters वाला questions, stable multi vibrators, positive feedback वाला questions तो लाया. इसके अलावा network और digital का भी कुछ questions लाया. So we will be doing that. Okay, so let's start the session. Thank you. Okay,
सो गाइस अभी तो अनअकैडमी पे 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है। 7 डे फ्री ट्रायल में आप लोग रजिस्टर करो। इफ यू डोंट हैव अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड। इफ यू स्कैन दिस क्यूआर कोड यू विल बी गेटिंग फ्री एक्सेस फॉर ऑल अवर प्लस कोर्सेस। मेरा क्लासेस, विशाल सर का, अंकित सर का, सारे प्लस कोर्सेस यू कैन वॉच फॉर फ्री फॉर 1 वीक। जस्ट स्कैन दिस, follow the steps, it will ask you the code, you just enter the code shankar 10. Okay, right. सो अभी तो अनअकैडमी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नया इनिशिएटिव भी है। आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स केवल 12,000 पे मिलेगा। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। बिना क्लासेस आपको मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू कैन टेक दिस। ओके, 2 years and 1 year का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। And this is the new batch going to start on plus from 18th August. If you want to start your preparation, we can start with this new batch which is going to start on August 18th. चलो भाई, स्टार्टिंग नेटवर्क्स आया। सो कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको स्टार्टिंग? आप ही कमेंट करो, अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट। सो आपको डीएनए में डी चाहिए, एन चाहिए, विच सब्जेक्ट फर्स्ट? आप कमेंट करो, मैं सिलेक्ट करता हूँ। जितना ज्यादा कमेंट्स पिच पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आया उस सब्जेक्ट तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 2 एनलॉग बोला, एक तो नेटवर्क बोला। ठीक है, टेल मी अदर्स आल्सो। ओके, 3 एनालॉग 3 नेटवर्क दोनों इक्वल। ठीक है, एनी अदर? सागर एक ही कमेंट मत, बार बार मत डालना यार, इट विल नॉट बी काउंटेड ट्वाइस। ओके, चलो दोनों को लिए इक्वली आया क्वेश्चंस, आई मीन इक्वली। सो मैं अल्टरनेट क्वेश्चंस करता हूँ। फर्स्ट एक क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क, एक क्वेश्चन ऑफ एनालॉग। सो एट द एंड वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल, बिकॉज आप लोग तो डिजिटल बहुत कम लोग बताया। ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। सो हियर, see guys, this is one of the most commonly occurred model with the network analysis. This particular question, okay, ये तो बहुत 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 बार आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया। ओके, जनरली व्हेन वी डिस्कस ट्रांजिएंट आई विल बी डिस्कसिंग इन द मॉडल 2, दैट इज नेटवर्क विद सोर्सेस इनिशियल फाइनल। ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली अकर्ड, इवन इन द रीसेंट पेपर्स आल्सो इस मॉडल का क्वेश्चंस तो आया। ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है, बट इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड मॉडल, इसलिए मैं तो इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। सो 1 मिनट टाइम तो सही है, आप लोग तो ट्राई करो। ओके, so second question will be from the analog. मैं कल भी ले रहा हूँ इस वाला सेशन, कल तो रात 9 बजे। ओके, टुमारो विल ब्रिंग लिटिल टफ क्वेश्चंस। आज तो स्टार्टिंग क्लास है ना, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो ऑप्शन, संजय सागर तो बोल रहा है ऑप्शन डी। राजेंद्र, राजेंद्र तो ऑप्शन सी दे रहा है। ओके, एनी अदर आंसर्स? ठीक है, छोड़ो बस। Chalo, let me do the question. In the network shown the below is in steady state with switch S open. ठीक है, so हमारा नेटवर्क जो है ना, आपको क्या चाहिए? What is the current through the 1 ohm resistor at time t equal to 0 plus? ठीक है भाई, पहले हमेशा हमारा पास नेटवर्क पे मेमोरी एलिमेंट्स है, तो हमेशा हम इनिशियल कंडीशंस निकालना चाहिए बिफोर द स्विचिंग एक्शन। सो स्विचिंग एक्शन के पहले, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0 माइनस, मेरा नेटवर्क कैसा है भाई? नेटवर्क तो स्टेडी स्टेट पे है। स्टेडी स्टेट पे हम इंडक्टर को शॉर्ट करना चाहिए, कैपेसिटर को ओपन करना चाहिए। इंडक्टर को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन। ठीक है,
बाकी नेटवर्क को एज इट इज ले लो। ये तो 12 5 1 5 1 and this one, ठीक है, switch is open. So because you have three memory elements, you need to find the three initial conditions. हमारे पास तीन memory elements है, इसलिए हम तीन initial conditions निकालना चाहिए। ये current तो zero, so what is this current? Zero, ठीक है भाई, okay। ये current will be 12 by 5 plus 1 6, 12 by 6 is 2, so ये सारे current यहीं पे आएगा। So the node voltage here will be, the voltage drop across the resistor will be 2, so ये current भी true and ये drop will be 2। Okay, so मैं तो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि it is not a regular class. The initial current in this inductor is 2 ampere, इस पे 0, इस पे voltage across the capacitor is 2 volts. So now let's draw the same circuit at time t equal to 0 plus. At a time t equal to 0 plus, मेरा switch तो बंद हो गया, close हो गया, ठीक है, 12 5 1, ठीक है। इंडक्टर का इनिशियल करंट कितना? यू शुड रिप्लेस इंडक्टर विद ए करंट सोर्स पैरेलल विद ए ओपन सर्क्यूट, कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए शॉर्ट सर्क्यूट, एंड इंडक्टर इज देयर इज नो इनिशियल करंट हियर, सो सिंपली ओपन सर्क्यूट, ठीक है भाई। एग्जामिनर को ये करंट चाहिए, ओके, दिस करंट ही नीड, व्हाट इज दिस नोड वोल्टेज? 2, this will be 12 minus 2 by 5 plus 1 is 6. So what is this current? 12 minus 2 तो 10, 10 by 6, 10 by 6 का मतलब 5 by 3. Option C is the right answer, 1.66, ठीक है। C कितना लोग दिया? D क्यों आया यार? D is the current in the inductor, but because this is shorted ना, this will not be same as this current, ठीक है। स्विच तो जीरो पे क्लोज किया, एग्जामिनर को जीरो प्लस पे चाहिए, जीरो के बाद ये स्विच तो क्लोज हो गया ना, क्लोज होने के बाद ये करंट और ये करंट इक्वल नहीं, ये करंट जो है ना ये दोनों पे डिवाइड हो जाएंगे, ओके। सो डोंट टेक इट एज ए 2 एम्पियर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना लोग दिया ऑप्शन सी? सारे लोग तो डी दिया, ओके, वेरी गुड शुभश्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। टू 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 सभी लोग तो दो दिया यार, राजेंद्र सी, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। सो अभी तो मैं अल्टरनेट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक तो एनालॉग का क्वेश्चन करके फिर वापस नेटवर्क का क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन से शुरू करेगा, इसके बाद वी विल डू द लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो लेटर। यस, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस। सुमित ने दिया ऑप्शन ए, ठीक है। टाइम अप, 10 सेकंड तो बाकी है, बाकी लोग भी ट्राई कर लो यार। Circuit with an ideal op-amp, the Border plot for the magnitude of the gain transfer function is given. The circuit provided. ये वाला मॉडल तो बहुत रिपीट हो रहा है यार, 2-3 बार आया, इलेक्ट्रिकल पे भी आया, ईसी पे भी आया, ओके। ऑप्शन, भानु तेजा दिया ऑप्शन बी,
Okay, let's see. Firstly, guys, ये वाला circuit क्या? ये वाला circuit is nothing but low pass filter because resistor and capacitor. आपको basics तो पता है मेरे हिसाब से होना चाहिए. If you have a RC circuit, it is a integrator and the low pass circuit. If it is a CR circuit, it is a what we call high pass filter. नहीं है तो आपको चाहिए तो okay. We can also prove it for those who don't know. If you take this node voltage as VA, let me just a moment here. If you take this node voltage as VA, this current is 0. Okay. So your output is equal to 1 plus this R by 1K. It is just a gain constant. You don't need to worry about it. Into VA. So आपका VA बहुत important. So ideal op amp में कोई current तो नहीं चलेगा. So आपका VA क्या होता है सर? Vin into 1 by SC by R plus 1 by SC. C का वैल्यू मेरे को पता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. So Vn into Vn by 1 plus SCR. ये मेरा V naught. Okay, VA. So V naught by Vn is equal to some इसको some K ले लो और G ले लो. So G times 1 by 1 plus SCR. 1 by 1 plus SCR is the transfer function of low pass filter with the cutoff frequency. Okay, omega cutoff frequency is equal to 1 by RC. ठीक है sir. And another thing here, uh, examiner को ये भी चाहिए 20. What is the gain here? Gain is starting with the 12. You observe carefully. 12 जो है ना, ये तो 9 पर कहाँ पे आ रहा है? 3 पे. What is the meaning of it? It is reduced by 3. It is called minus 3 dB point. This minus 3 dB point is also called as the cutoff frequency. This is your omega c, log to the base 10 omega c according to the examiner. ठीक है, 1 by r you take r1 because r तो ऊपर use किया ना, right? So now use this information, find the value of r1, find the value of find the value of r and c. I can find it, we can find it easily here. Please see here. If you substitute omega equal to 0, okay, at omega equal to 0, what is its value? It starts with 12, right? So 20 log AV, okay, is equal to 12. So log AV equal to 12 by 20. So log to the base 10, 1 plus, what is that value? R by 1K is equal to 12 by 20. If you apply anti-log and all those things, 3 आएगा क्या? 4 आएगा. Yeah. This will give you 1 plus R by 1K equal to 4. That gives R equal to 3K. This is one thing. Similarly, please listen here. Log to the base to 10 omega c, okay, is equal to, given by examiner, 3. So what is the omega c value? 1 by R1 into c. Okay, this is equal to 3. So 1 by R1 into c is equal to 10 power 3. Just a moment. If you want, I can repeat the explanation. Then what is the c value? 1 by R1 into 10 power 3. But what is the R1 given by examiner? आपका examiner कितना दिया R1? 1 किलो. ठीक है. So इसका मतलब 10 power 3 into 10 power 3. 1 microfarad. ठीक है. So here one important concept, please understand.
he has given this Bode plot with respect to log to the base 10 omega. It is not omega value. So cutoff frequency is not 3. Log to the base 2, the cutoff frequency is equal to 3. Okay. The same way, the gain 20 log to the gain is 12. The initial gain, you can say, that is when omega equal to 0, this part will be 1 by g, 1 into g, na, this value is equal to 20 log into this is 12. By using that two informations, we obtain the value of this R and C. So R equal to how much आया 3K, C equal to 1 microfarad. Option A. कितना लोग को आया ऑप्शन ए? वेरी गुड, वेरी गुड. सुमित राइट आंसर, तुषार राइट आंसर, दर्शन एंड सुडो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट आंसर. चलो, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So according to our what we call notation, the next question from, okay, you can try from the network analysis. I don't think 30 questions will be possible in this session यार, बहुत टाइम लग रहा है. अगर बिना सॉल्यूशन है तो 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे. मैं तो सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करना चाहिए ना. So try this question. Okay, give a try. ये तो नेटवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग आसान से कर सकते. You can do the question as easily as possible. You can do, definitely. ट्वेंटी सेकेंड्स मोर. संजय शर्मा ऑप्शन बी दिया. ऑप्शन डी. टाइम अप. मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए. लेट मी चेक इट. ओके, आई टू डोंट रिमेम्बर. ठीक है. सपोज हियर ये आपका V2, ये आपका V1 ले लो. आपका V0 कितना होता है भाई? V1 माइनस V2. ठीक है, यही तक क्लियर है. आपका V1 कितना? Vs. सपोज इफ यू टेक दिस करंट एज I1, ठीक है, आपका Vs क्या होता है सर? V1 इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज Vs. आपका I1 कितना होता है? I1 कितना होता है? सॉरी, Vs कितना होता है? L1 di1 by dt. Actually you should consider the mutual inductance also, but mutual is a secondary open circuit में कोई current नहीं है ना, the mutual induced EMF here will be 0. So okay, fine. What is di1 by dt according to this Vs by L1? मैं तो बाद में यूज करना चाहिए. Now अभी आप बताओ what is your V2? V2 equal to L2 di2 by dt, बट कोई करंट तो नहीं जा रहा है भाई, प्लस m इंटू डी आई वन बाई डी टी. m इंटू डी आई वन बाई डी टी. m इंटू डी आई वन बाई डी टी. व्हाट इज डी आई वन डी टी? वी एस बाई एल वन. सो इट इज 0 प्लस एम वी एस बाई एल वन. सो आपका V1 माइनस V2 कितना होता है सर? V0 is equal to V1 minus V2. Vs माइनस, बिकॉज ये तो Vs है भाई, माइनस MVs by L. सो Vs इंटू 1 माइनस M by L. ऑप्शन बी. ठीक है, कितना है? केवल एक ही आंसर राइट है. संजय शर्मा, गणेश और सुमित, तीन लोग तो राइट आंसर दिया. ठीक है. Shall we move for the next question? Any doubts? Feel free to ask me. कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. Explanation में कोई दिक्कत है तो any question you feel some sort of difficulty, feel free. Don't hesitate anymore. Okay? आपको कोई भी difficulty है तो, कोई भी दिक्कत है तो always feel free to ask me. So let's move for the next question. Before that, so next question तो analog से करना चाहिए, right? Okay. ठीक है, एक ये simple question कर लो analog.
Okay, give a try. Please try this question. यार हाफ एन आवर टाइम तो हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं किए. हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? फोर्थ क्वेश्चन. इतना टाइम ले रहा है. ट्राई, 5 सेकंड बाकी है. एक आंसर भी नहीं आया, ज़्यादा टाइम चाहिए क्या? ट्राई द क्वेश्चन. Anybody else? It's a network question only यार. It looks like an unlock question, but it's an unlock question ही नहीं है. You have not done. Let me do it. So see here. Firstly, because it is a negative feedback, we can take the virtual short concept. This node voltage 1 है तो ए भी 1 वोल्ट होना चाहिए कंपलसरी. ठीक है भाई, फाइन, यही तक सही है. एंड इस पे कोई करंट तो नहीं चलेगा. देन व्हाट इज दिस करंट? 1/50. इफ दिस करंट इज 1/50, ये करंट कितना होना चाहिए? केसीएल को सेटिस्फाई करना चाहिए. आइडियल ऑप एम्प का इनपुट में कोई करंट तो नहीं चलेगा. ये 1/50 है तो ये भी 1/50 होना चाहिए. ठीक है. सो दिस करंट इज ऑल्सो 1/50. Right? Now you see here. Here it is not a balanced bridge. Okay. 1 plus delta by 1 minus delta, 1 minus delta by 1 plus delta. Balanced bridge तो नहीं है. But add these two resistor 250 into 1 plus delta plus 1 minus delta. You get 250 into 2 500 आएगा. ये भी 500 आएगा. So ये दोनों equal resistances है. मिलके, okay, ये दोनों मिलके they are equal resistance because two resistors are in parallel. You add these to them as these two, they are equal resistors. So current will be undoubtedly same because when the elements are in parallel and impedance is equal, the voltage is same. Voltage by impedance, the current will also be same. So if it is 1/50, this must be 1/50/2, that is 1/100, and this must be 1/100. हो गया क्वेश्चन. So अभी V नॉट कितना होता है सर? V नॉट इज इक्वल टू 250 into 1 plus delta, okay, into 1/100 minus 250 into 1 minus delta into 1/100. हो गया क्वेश्चन. इतना आसान है. अब तो 250/100 कॉमन ले लो. 1 plus delta minus 1 plus delta. So 250 by 100 into 2 times delta. Delta कितना दिया एग्जामिनर ने? 0.05. So 250 by 100 into 0.05 into 2. ये तो 0.1 हो जाएगा. 0.1 का मतलब 25 वोल्ट्स आ रहा है क्या? कैलकुलेशन 2.5. वेट 0.1. ओके, वी नॉट इन मिली वोल्ट्स चाहिए. मेरे को 250 मिली वोल्ट्स आ रहा है. बस
because this will be 0.1 by 1000 आएगा 250,000, right? Okay, anybody, any doubt? There is nothing great in this question, no difficulty. I hope you people easily you can answer it. Okay, so but figure देख के I say the same thing in every class, whether it is a plus class, special class, YouTube class, सारी classes में मैं ये compulsory input देना चाहिए. Everybody, when you see any question, यू मस्ट नॉट हैव एनी फियर इन योर माइंड. ठीक है, आपका माइंड पे फियर नहीं होना चाहिए, अरे यार क्वेश्चन पे डेल्टा है, ये सभी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ऐसा सोच लिया तो यू नेवर बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ऑलवेज हैव व्हाट वी कॉल द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड इफ यू स्टार्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. हमेशा आपका माइंड पे ऐसा होना चाहिए, अरे यार इस पे नथिंग, इट इज इजी, वी कैन सॉल्व इट, ऐसा होना चाहिए आपका माइंड पे. ओके, ये तो सॉल्वेबल है, इट विल बी इजी, इट विल बी इजी, ऐसा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस से whenever you start any question, definitely 50% of the question is done. Okay, chalo, right? So right, let's go for the next question. ठीक है, let's do this basic question, नेटवर्क एनालिसिस का, फिर एनलॉग पे वापस आता हूँ. Read this. ये क्वेश्चन तो आसान है यार, आप लोग तो 100% आंसरेबल मेरा हिसाब से. लेट अस सी, 30 सेकेंड टाइम तो इनफ है इस क्वेश्चन के लिए. ऑप्शन डी राइट आंसर. ठीक. हाँ, सो इन दिस नेटवर्क, ठीक है, कोई भी कुछ नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क पे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी समय पे, कोई भी नोड पे केसीएल हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए. केसीएल हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए. सो इन दिस क्वेश्चन 12 इज एंटरिंग ना, -12 cos ओमेगा टी -5. हमारा स्टाइल ऑफ केसीएल क्या, एंटरिंग है तो हम माइनस लेते, लीविंग है तो वी टेक द प्लस. वी डोंट वरी अबाउट एंटरिंग इक्वल टू लीविंग, ऐसा नहीं लिखते ना. सो दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय एग्जामिनर. ठीक है, these are given by examiner only, we are not taking that. So IL is entering the node, so minus IL of t, IR also leaving the node, so plus IR of t equal to 0. एग्जामिनर ने आपको ये IR का पूरा इंफॉर्मेशन दिया, बट IL का केवल और केवल 0 समय पे इंफॉर्मेशन दिया. सो I have the information about the IL at time t equal to 0 only. I don't know the inductor, I don't know anything else. बाकी नेटवर्क भी पता नहीं, इसलिए substitute time t equal to 0 because KCL कोई भी समय पे applicable. So -12 cos omega t का जगह पे 0 ले लो, -5 minus IL of 0 plus IR of 0 equal to 0. ठीक है, so what is IR of 0? IR of 0 तो 4 e power -0 plus 3 e power -0, 4 plus 3 तो 7. ठीक है, सबस्टिट्यूट कर लो जी. -12 cos 5 minus IL of 0 -1, IR of 0 plus 7 equal to 0. So 12 cos 5 equal to 6, cos 5 equal to 0.5, आपका 5 equal to 60 degrees और 5/3. ठीक है, cos inverse of 0.5 is 5/3. Okay, so I hope this is clear.
वेरी गुड, पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स क्यों आया यार, पाई बाई थ्री ना। मैं गलत, कॉस 30 नहीं, कॉस 60 है ना, 0.5। ओके, ठीक है ठीक है। सो इज इट फाइन, शेल वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी? ओके, लेट्स नॉट वेस्ट, सी एनी क्वेश्चन पे एनी टाइम पे आपको एनी डाउट है तो फील यू कमेंट, ओके। अगर आप लोग कमेंट नहीं किया तो मैं ऐसा सोचता हूँ इट इज क्लियर फॉर यू, ओके। यू कैन आस्क मी द डाउट्स इन इंग्लिश, आप हिंदी पे भी यू कैन आस्क द डाउट्स, कोई भी लैंग्वेज, इट डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी। चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक बहुत आसान क्वेश्चन ही किया ना, थोड़ा सा अ, ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, I know it will take little more time, no problem, give a try. Good. Sinka, oh sorry, Mitra, okay. Mitra, it depends, okay. I cannot predict the paper. Me or anybody else cannot predict the paper. एक तो कंपलसरी हो रहा है, ये क्वेश्चन तो आ रहा है कंपलसरी ऑप एम्प से, ओके, इट इज हैपनिंग एवरी टाइम। सो द ट्रांजिस्टर वाला मॉसफेट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ओके। if you are okay, if you miss one question also it is fine, then you may skip it, otherwise better if you have time you can prepare, it is depends on your individual choice। जैसा आपका रेगुलर सब्जेक्ट्स आर नॉट एट कंप्लीटेड, पहले वो तो कंप्लीट करके वापस आओ इसमें, बिकॉज इससे इलेक्ट्रिकल के लिए हार्डली 3 क्वेश्चंस में काम, ओके। सो अकॉर्डिंगली यू शुड डिसाइड फॉर इट, बट इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, एवरी ईयर इट विल चेंज। टाइम तो इंक्रीज करना, ले लो, 1 मिनट और ले लो। Anybody else, any other answer? यार एक्चुअली स्विच के बारे में कुछ नहीं बताया, ओके। आई डोंट नो सुमित, एनी अदर आंसर? तुषार तो सी दिया, ओके, एवरीबडी इज गिविंग सी, लेट्स ट्राई। Okay, so you can start from any option. So maybe -5 to +5 or +5 to -5, whatever may be the transition, you can check. Say for example, your output is equal to +5. Assume, okay. So output is at +5. Why it is +5, sir? Because of this Zener diode combination. Okay.
output may be at 5 or minus 5 only. Suppose maybe any one of the diode will be followed bias when it is at VSAT or minus VSAT, other diode will be reverse biased and it will give you 5 volts here. Okay. So if it is reverse biased, it may give minus 5 volts. If it is reverse biased, it may give plus 5 volts depending on the diode which is selected. So your output can have two possibilities, either plus 5 or minus 5. Okay. So output can be either plus 5 or minus 5. Understand? Suppose if it is at plus VSAT. Okay. When it is at plus VSAT, suppose if we try to plus VSAT, उस समय पे this forward bias okay, ये reverse bias okay, it will make this voltage constant to 5. Similarly, when it is at minus V set, then it will be forward reverse biased and it will be forward biased and it will make it as minus 5. So it will what we call confine your output to be either plus 5 or minus 5 only. Now, what is this node voltage? Let's take this node voltage as VA. Okay. So आपका VA कितना? VA is equal to V naught into this particular resistance by total resistance, because इसमें कोई करंट तो नहीं चलेगा. 100k by 10k plus 100k. So what is this answer? V naught into 100 by 110, 10 by 11. ठीक है? Am I correct? V naught into 10 by 11. So it can be plus or minus. So $50 by 11. So you can say your VA equal to plus beta V naught minus beta V naught. It will be 50 by 11 minus 50 by 11. Anything can be possible. So मैं तो assume कर रहा हूँ, I'm assuming my output is at plus 5 and उस समय पे क्या हो रहा है? It is at 50 by 11 VA. Okay, now what happens? Now what happens? Okay, according to actually switch to now for the capacitor circuit, you have 1K, you have a capacitor and you have 10 volts, that is minus 10, and here you have a plus 10. Okay. So whenever your node voltage, that is VC, okay, if VC is greater than 50 by 11, my V naught will become minus 5. Yes or no? Whenever the voltage across the capacitor increases more than what we call, when the voltage across the capacitor increases, we assume the plus 5 ना. Okay. So इस नोड पे 50 by 11 आ रहा है, ठीक है. 50 by 11 से यहीं पे ज़्यादा है तो then what happens? It will trigger again to change the output to minus 5. Okay. So इस केस में हम क्या करना? Okay. So this voltage is how much? 20, because it is 10 and this is also 10. So आपका VC of infinity कितना होता है सर? 20. Okay. Initial value actually there are two possibilities. If you are starting initially, it might be at minus 50 by 11. Okay, or it can be 0. We can take both the possibilities. First, let me assume it has 0. Okay, then VC of t equal to, what is the formula? This is the VC. This is applied to the negative terminal of the op amp. So VC of t is equal to final value. Initial value 0 है तो 1 minus e power minus t by tau. What is the tau value? Tau is equal to 10 power minus 8, 10 power 3, 10 power minus 5. This is 10 power minus 8 into 10 power 3, 10 power minus 5. Tau equal to RC 10 power 3 into T. We'll use that later.
Now we need to find the what we call time at which the voltage will reach 50 by 11. Okay, so 1 minus e power minus t by tau equal to 50 by 11 into 20, right? Actually, we should take steady state condition only. First time it happens like that, then it will charge to 1 minute here, 1 minute. First time it will be at 0. Okay, fine. When it reaches 50 by 11, it changes its state. Okay, to minus 5. Uh, Actually, we missed some statement or what regarding the question. 8 minute, 8 minute. How the switch is changing? Actually, see here, the statement I missed it. The switch in the circuit shown in the figure is initially closed. It is opened at time t equal to 0. Okay. The behavior of V naught for t greater than 0. Okay, initially it is closed and opened ना initially आप लोग 0 ले लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं right now see here 1 minus 50 by what is 11/20s 11 naught 1 minus 50 by 2200 equal to minus t by tau ठीक है so here t equal to minus tau into ln of 1 minus 50 by 2200. So just let me do the calculation. को 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1 मिनट
कुछ कैलकुलेशन का गलत किया क्या, एक बार चेक करो यार। अच्छा एक मिनट। ओके, हाँ, जस्ट ए मिनट, हम तो सही किया, एक मिनट। This node voltage is VC, right? What is this node voltage? VC minus 10. Actually में हमने ये गलत किया. This is VC, right? And this is minus 10. So ये नोड पे कितना वोल्टेज होता है? VC और minus 10 together होता है ना? That is your VA. VC minus 10 is your VA ना? So अभी तो क्या होना चाहिए? Your VA must be 50 by 11, then VC minus 10 must be 50 by 11, then VC कितना होना चाहिए? 50 by 11 plus 10, 50 by 11 plus 10, and that will be calculator. $14.5. So here I should take 14.5 into consideration. एक छोटी सी गलती यार, बाकी तो सही है। ठीक है, ठीक है। Now 1 minus e power minus t by tau, 14.54 by 20. Okay, so e power minus t by tau equal to 1 minus 14.54 by 20. 1 minus 14.54 by 20. This will give you 0.273. Minus t by tau equal to ln of 0.273. So ln. This will give me minus 1.29. Okay, so t by tau equal to 12.9. T equal to 1.29. T by tau equal to 1.29. Okay, then t equal to 1.29 into 10 power minus 5. That is 12.9 microseconds. ठीक है भाई, अभी तो ऑप्शंस पे जाओ। ओके, 12.9 माइक्रो तो ऐड करोगे। ऑप्शंस, who has given C? Okay, anybody have doubt? Now ask me. One minute. एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने। Okay, I am explaining C here. Okay, 12.9 is the right answer. Please listen carefully. This is the circuit, right? ये वाला circuit पे, okay, first condition देखो. So this Zener diode will keep the output voltage to be constrained to be at plus 5 or minus 5 only. So it will fix this value to be plus 5 or minus 5 only. By voltage division principle, this node voltage will be here how much? Your this node, okay. अपने इसको VB ले लो, because मैं तो already here VA use किया. Okay, variables. Okay.
चलो, now see here. Now, so try this question यार. Today's last question for today's class. Okay, आज का आखिरी question है. इस particular topic से बहुत ज़्यादा questions आया PYQ पे. So you should be careful with this, what is called multi vibrators वाला topic. ठीक है? So try this question. Last question for today's class. If you knows the concept originally, अगर मेरा क्लासेस सर कोई भी अनलॉक क्लासेस आप अटेंड करके कंप्लीट किया तो ये तो हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. नो आंसर. देखो भाई, इस वाला क्वेश्चंस पे डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए. 2 टाइम्स टाउ ln ऑफ 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा. मैं तो डेराइव भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. सो 2 इंटू आपका आरसी कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ ln ऑफ what is this value beta. Beta is equal to 2k by 2k plus 2k, r2 by r1 plus r2, that is 0.5. So that will give you 1 plus 0.5 by 1 minus 0.5. हो गया क्वेश्चन. सो 2.5 तो 5 हो जाएंगे ना. 5 milliseconds into ln of 3. Okay, that will give you milliseconds as the answer. Okay, this is your answer from -5. Okay, once it charges up to 5, your output will change to -10. And it discharges up to -5. -5 से ज़्यादा हुआ तो immediately our output changes to +10. This is what happens internally. Okay, so this is how your VC will vary. ठीक है, मैं तो again repeat कर रहा हूँ because it is V0 by 2. If it is 10 है तो here it will be plus or minus 10 by 2. Your triggering point बोलते plus or minus 5. ठीक है. So when capacity is charging, it reaches 5. 5 के बाद क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा चेंज टू -10. Once it is -10, it will charge now to -10. 5 -5.1 होने के बाद positive at -5, negative at -5.1. So positive is more positive, then it will change to +10. That is what's happening. So here examiner को क्या चाहिए, time period चाहिए. So if you take this as total time period, this will be by 2, this will be t by 2. Maybe initial conditions छोड़ के steady state waveform we are drawing. So now please listen. What is your VC of t formula? You take any condition while charging or discharging, कोई भी ले सकते. मैं तो charging वाला condition ले रहा हूँ. Charging का समय पे what happens? Initially it is at -5. It is charging to plus. Originally it is charging to +10, but it will stop at 5. Actually, I think बीच में stuck हो गया यार. Don't worry, I'll repeat the things for you. I don't know, आज कुछ network में कुछ issue है. See here, this question lastly we have done. So capacitor is charging from -5 to +5. So originally it is intended to final value of 10. So VC of t equal to final plus initial minus final e power minus t by tau. At half time period its value will be 5 because it is reaching 5 and stops, and 5 equal to 10 minus 15 e power minus t by tau minus where anytime you want to take the subscription use the code Shankar 10. Okay,
सो मेरा अनलॉक कोर्स, नेटवर्क कोर्स, सभी कंप्लीट कोर्सेज तो अवेलेबल. Okay, you can take this, scan this QR code, okay, and you will be getting free access to the subscription. Plus, का उसमें 1 week ले लो. My unlock course is there just to